Hello friends, welcome to my channel Techie Krish. As we have been discussing files in Python, so in our previous videos, we have discussed what are the files and what is the need and how to open the file, what are the methods of opening the files. So we discussed two, that is open method and open with method. So what is the difference between these two methods? Open requires close function when you open the file, whereas with open does not require close function because as soon as you come out of the scope of with open method, it automatically closes the file. Now this is the time to discuss more thing about the files. As we have already discussed, some programs or some examples I have taken to write something onto the text file, and this time especially I'm going to discuss two methods of writing the writing the text onto the file. So these methods are a write function and a writelines functions. So writeline functions and write function both are used for writing the text onto the file. But in this case, one thing is mandatory, that the file which you are going to open, it should be in W mode. So when you use W mode, इसका मतलब ये है कि अगर W mode आप use कर रहे हैं तो अगर फाइल नहीं है, ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट क्रिएट नहीं हुई है, तो ये जो मेथड है W mode मेथड विल create the file, or अगर already created file है, already exists, then it will delete the content of the file and writes the data from very scratch. So this is the meaning of W mode, opening the file in W mode. Okay. Secondly, अगर आपने जो फाइल ओपन किया है, फाइल ओपन करते वक्त आपने अगर मोड यूज नहीं किया है, फाइल मोड यूज नहीं किया है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है रीड मोड में फाइल ओपन होगी. तो अब हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं these two methods, write method and write lines method. Okay, so first we take write method. So in write method, you must know that if file doesn't exist, it will create the new file, and if file exists, it writes the data, and if the existing file contains any information, then information is deleted and new information is written from scratch. So ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. Still these are 2 points about W mode. Okay, so if you are going to use write method to write the information to the file, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो डेटा राइट फंक्शन के थ्रू लिखा जाएगा फाइल के अंदर, वो उसमें डेटा का जो फॉर्म होगा, जो फॉर्मेट होगा, वो होगा स्ट्रिंग फॉर्मेट. स्ट्रिंग फॉर्मेट का मतलब है कि आपको जो डेटा देना है वो या तो डबल कोट्स में हो या उसे टाइपकास्ट करके स्ट्रिंग बनाया गया हो, तभी आप उसमें उसको लिखवा सकते हैं. उसके साथ ही साथ इट इज मैंडेटरी टू ऐड बैकस्लैश एन, दैट इज ईओएल, यानी हर एक लाइन के अंदर लाइन के एंड में आपको बैकस्लैश एन लगाना जरूरी होगा. हालांकि आपने देखा होगा जब मैंने प्रीवियस वीडियोस में जो एग्जांपल दिया था, एग्जांपल में मैंने ऐसा कुछ बैकस्लैश एन वगैरह यूज नहीं किया था, बिकॉज that file was written in notepad and directly I had written the text. But this time I'm going to write the data using the program and write method. So it becomes mandatory to attach backslash n in the end of the line or text or the string. Secondly, since the write mode will or write method will write the text in string format, and if you are willing to write numbers in the text file, then it becomes mandatory again to convert these numbers into a string format or put in double quotes. So if you are using variables, so variables cannot be put in double quotes, so you will have to
typecast it, or you will have to convert these identifiers or variables into string variables. Okay, so without wasting time on this discussion, we are moving towards our Python ideally, where we'll write the writing program. So here this is ideal interface. यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज करिए कि मेरा एक फाइल हमने लिया है f, और फंक्शन नेम इज ओपन, एंड हम इसको लिखने के लिए जा रहे हैं. तो हमारे पास दो आर्गुमेंट्स होने चाहिए, 1 and 2. दो आर्गुमेंट्स हमने लिख लिए. एक आर्गुमेंट होगा फाइल नेम. तो फाइल नेम का मतलब ये होगा कि मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ कि डेमो टेक्स्ट फाइल .txt, एंड चूंकि मैं इसको राइटिंग मोड में लिखने जा रहा हूँ, तो मुझे डेलिबरेटली आई हैव टू इंक्लूड w here, एंड if I omit this w or mode from here, इसका मतलब ये है कि I am trying to open this file in read mode, and if the file doesn't exist in the directory or in the folder onto this or onto the disk, it will give the error because this file is not there onto the disk. And if this file by chance is available, then it will be opened in read mode, sorry. So file is opened. Now this time I am going to write some text onto the file. So f dot write, since it should be the string, so I am writing this is the text file, and after the line, since line is over here, then I have to attach end of line character, that is \n. So this line is written onto the file, and one more statement just to show that we have written the text onto the file. The text is written onto the file. That's it. And here I'm not including close, though this will this will create the file demo text.txt, but it will not write the text which I have given here. Okay, so now I'm going to save this and run this. I'm going to give name demo text, and save. So the text is written here. Okay, now I'm going to check whether this data is written onto the file or not. So my default path is Python 310. The file name is demo text. Let me see whether file is created or not. See here, demo text. Let's see whether this file contains any data we have given through the program, and this shows there is no data written onto this file. So what I am going to do here, I will have to include close. So first, this becomes mandatory for me to close the file. Close.
Now run this, and this time it will surely write the content onto the disk. So text is written onto the file. Now हम चेक करते हैं कि ये फाइल में लिखा है या नहीं लिखा है. Demo, demo text. This is a text file. So just open it and observe whether it is written or not. So here this is written. This is a text file, and if I add more line to this file, this file is created today only, and again put new line, end of line here, backslash n. And since you are using W mode, so if I use if I rerun this program, this will again delete the previous content and writes new content onto the file. And I have used two times end of line or backslash n, so there will be a gap of line between these two lines. So again run this. Okay, so we'll check whether both the lines are written or not. So here there are two lines with one blank line. तो इस तरीके से हम write फंक्शन यूज कर सकते हैं. उम्मीद है आपकी समझ में ये चीज आ गई होगी. अब मान लीजिए मुझे कुछ डेटा ऐसा लिखवाना है कि मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया, जिसको मैंने कोई वैल्यू दिया a is equal to say 20, and this is the variable and integer type, and next value is say 30, and c is equal to a plus b. अब इसको मैंने जो है अपनी टेक्स्ट फाइल में लिखवाना है. तो टेक्स्ट फाइल में लिखवाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जो है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा. तो मैं स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करूं, f dot write the first variable a is equal to comma str of a. So this is written. In the same way I can write the next one, write the second variable is b and its value is comma str b, and third also f dot write
the sum of str a and str b is equal to str of c, क्योंकि ए बी एंड सी तीनों ही वेरिएबल्स इंटीजर टाइप हैं, और क्योंकि हम टेक्स्ट फाइल में केवल टेक्स्ट लिखवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक थोड़ा सा छोटा सा चैलेंज आ रहा है, वो ये कि आई विल हैव टू राइट द नंबर्स onto this demo text, or I can change the name also, demo sum कर देता हूँ, demo sum, and now save this program and run this program. Okay, so there is the problem first variable. Oh, sorry, variable. It should be the variable. I have like taken 20 directly. Okay, now run. Let's see. Text. The write function. Okay, 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 okay. It can take only one argument. So मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने जो है इसको कॉन्केटिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. होप दिस विल वर्क. क्योंकि एक ही आर्गुमेंट लेना है, जैसे राइट जो है सिंगल आर्गुमेंट चाहता है, तो मेरे ख्याल से क्या कि सिंगल आर्गुमेंट है, तो मुझे इस पूरे को स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करके चलना पड़ेगा. देखते हैं अब क्या होता है. Okay, this time it is executed, so we are going to see whether it is written perfectly or not. Demo sum. Demo sum is, this is the text file. So here output is perfect, but since we have not used end of line, and that's why it is showing such kind of output. So just have a look on this. So I am going to give plus backslash n here, plus backslash n here, again plus backslash n here, and this time the output will the perfect output which we were expecting. Okay, so this is the output. Now we will
look into the file. Demo sum. Demo sum. So here this is the output. The first variable a is equal to 20, second is this and third is this. तो यहाँ पर मैं यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर आपको कोई नंबर भी टेक्स्ट फाइल में लिखवाना है तो उसको आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हमारा हो गया राइट फंक्शन। अब हम चलते हैं दूसरे फंक्शन पर जो कि है राइट लाइन्स। तो हम राइट लाइन्स पे भी कुछ काम करते हैं। तो पहले हम चलते हैं अपने मेथड पर। तो यहाँ पर जो स्लाइड बोलती है राइट लाइन्स में मुझे क्या करना है, तो राइट लाइन्स को एक बार फिर देखते हैं और राइट उसके बाद हम प्रोग्राम करते हैं। Write is done and the next function is write lines. This method is used to write the sequence data types in the file. It could be in the form of a string, it could be in the form of tuples, it could be in the form of lists or dictionary maybe. So we'll use write lines method in our program. So again we are moving towards our ideally. हम अपनी ideally में वापस चलते हैं और यहाँ पर हम नया प्रोग्राम तैयार करते हैं. So the name is same and this time हम लिखवाने वाले हैं कुछ list. L is equal to रविंद्र शर्मा बैकस्लैश n. अगर मैं बैकस्लैश n नहीं लगाऊंगा तो ये सारा का सारा डेटा एक ही उसमें आ जाएगा, यानी एक ही लाइन में आ जाएगा. तो मैं क्या करता हूँ इसको, चलो पहले देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है. कॉमा अरविंद सिंह एंड दूसरा देते हैं. तो हमने तीन नाम यहाँ पर दे दिए और ये लिस्ट हमने बना दिया. और लिस्ट बनाने के बाद हमने क्या किया कि कुछ गड़बड़ दे रहा है. हाँ यस, यहाँ डबल कोट्स हो गया, सिंगल कोट करना पड़ेगा. और ये हमारे पास लिस्ट तैयार है और इस लिस्ट को हम लिखवा सकते हैं किस तरीके से. f डॉट राइट लाइन्स एंड l और तब हम करते हैं इसको सेव और इसका नाम बदल देते हैं, नाम देते हैं डेमो राइट लाइन्स. This list is written onto the file. Now we'll see what is the form of the output. This is again Python 310. The system is very sluggish to processing, very slow.
open. उसी हमने क्या लिखवाया है, डेमो लाइंस। देखते हैं क्या आता है। डेमो लाइंस। तो देखिए यहाँ पर ये डेटा जो आया है वो सारा का सारा एक लाइन में आ गया है। यानी हमें क्या करना होगा, हर एक डेटा के साथ में न्यू लाइन या एंड ऑफ लाइन देना पड़ेगा। तो जस्ट डू इट। So include backslash n here, backslash n here, and save and run. Now see the file and again open this. See what happens. So see here. So they are names of the list in different lines. We can use tuple also. So for that, I have to just change this or make this data tuple. मैं इसको नाम भी बदल देता हूँ, ये कर T, and here also the tuple is written, and save it, run it, and okay, and just have a look on this file. Again open this. So this was the tuple. So here this is the form of tuple. So we can write a string also. So we can write a string, we can write tuple, we can write list, we can write dictionary. So whatever you want to write, you can write it here. So this is the demo of these functions. Like if you want to write, uh, create the file, or want to write the text, you want to write the numbers, you want to write the list, you want to write tuples or dictionary, whatever you want to write, you will have to use write or write lines functions. So over here. So hope this is clear to you, and if you have any issue on the program which I have discussed here, and if you have the program, kindly write in the description box so that uh, I can resolve uh, your problem then and there. And in the next video, we'll come with the new topic. So मिलते हैं अपने next